सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी। ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा ही। धरती और सातवें आसमान में फर्क बस इतना सा ही। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया। Hello, good afternoon, everyone. A very warm welcome on this special series of Business Opportunity Over Chai, Business Opportunity Over Chai, presented by the management of Franchise India, with an aim to introduce you with a new brand every day at 12 o'clock. Today also, we are available in front of you at 12 p.m. to introduce you with the new brand, with one new brand. About the brand, I have briefed a bit information in our previous webinar, which happened yesterday at 12 p.m. And now to give you a brief note, brief information and the opportunity related to this brand, we have our brand owners with us to explain you more about the brand and the details. Before I take it forward, let me just run you through with the Q&A process. If you have questions during the webinar, you can type them into the Q&A window. We will take up all your questions post our webinar, like the presentations are done, and we'll take up all the questions in the end. But before I introduce you with my brand, I just want you to see a small video which I'm going to present in front of you. Stay tuned for that. Let me just play this video for all of you. स्पॉटलाइट तो आपके बिजनेस पर है ही, तो all eyes are on you, all eyes are on India. Be a part of Franchise India 2023 Signature Edition and get your business to fly high. 300 plus Indian brands, more than 100 global brands, over 10,000 trade investors and buyers are there for you at Geo World Convention Center this 19th to 20th November. For more info, go to franchiseindia.com/expo. So we are coming up in Mumbai with the bigger show on 19th and 20th of November after the overwhelming response of Franchise India 2023 Delhi. We are coming with Mumbai Franchisee Show with bigger in opportunity, with 300 plus business ideas, 400 plus delegates, 10,000 plus premium business visitors, 100 plus business concepts from over 16 countries, and a team of 100 plus franchise Indians to personally assist everyone at the show to make the most of the business festival. I would want you all to register your seats, and if you're a brand, you can book your booth. You can get in touch with us directly for the discussion, as we have limited booths left. Also, we have limited registration seats left with us. So now let's move forward towards our brand, the brand which we are going to introduce you today. Let's just talk about that only. So our today's brand is Ranishaa. They are North India's one of the prominent silver jewelry brands with a legacy of 100 plus years. They deal in silver jewelries, that too Hallmark silver jewelries. And now they're looking expansion into North as well as some part of South.
So today we do have the co-founder and founder, Mr. Pramukh Vaish, along with his wife, Mrs. Vaish, who's actually running this business, the silver jewelry business in North India, in front of us on this panel today to explain you more about the business opportunity as well as expansion and how this brand is different from other brands which are already there in the market and selling jewelries. So, Mr. Pramukh, Mrs. Desh, I would want to welcome both of you here on this panel today. Thanks a lot for joining us today on this panel. Thank you And I so would much. request you to please Thank you take so it much. forward from here and just give us a brief about the brand, how it is different from other brands there in the market, and what all opportunities you have for our investors and participants who are watching you live. Over to you, Mr. Bresh. हाय रेनिशा हमारा जो ब्रांड है ये हमने अभी 3 इयर्स पहले स्टार्ट किया है। हमारी पेरेंटियर ब्रांड जो है टिकाराम एंड सन्स ज्वेलर्स है और हमने इसको 3 इयर्स पहले स्टार्ट किया है और हम इसको अभी तक B2B और ऑनलाइन प्रमोट कर रहे थे। हम उसको फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में ले आए हैं। तो अभी अभी रिसेंटली हमने एक स्टोर ओपन किया है बनारस में। तो हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है वहाँ से और अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूपी और NCR लेवल पे भी इसको लेके आऊँ। और हमारी ये जो ब्रांड है इसमें मोस्टली जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सब इम्पोर्टेड हैं। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट जो मोनोपोली का है कि ये जो आइटम्स और ज्वेलरी हम लोग रख रहे हैं अपने रेनिशा के अंदर, ये आपको फिर इंडिया लेवल पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मतलब जो डिजाइन्स हैं, मेरी वाइफ देवी जो है वो डिजाइनर है। तो हम जो इंडियन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं या इंपोर्टेड ज्वेलरी जो डिजाइन्स बनवा रहे हैं वो हमारे यूनिक डिजाइन्स हैं जो कि आपको इंडिया लेवल पे कहीं भी नहीं मिलेंगे। और फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में अगर हम बात करें तो अभी सिल्वर ज्वेलरी में कोई भी फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में नहीं आया है। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सिल्वर ज्वेलरी में अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी ओवरऑल ब्रांड के बारे में एक बार दिव्य जो है इसको आगे गो थ्रू करेंगे। Thank you so much. Well, I would just like to share the screen. Is the screen visible? Yeah. Okay. So as we talk about Ranishaa, Ranishaa is a brand which consists of silver jewelry, which is a mixture of fusion with minimalistic range as well as the integrate part with the delicacy of the artisans, which can be showcased there. The brand talks about uh, designing exclusive range for the Indian women's and making them feel like a Rani when they wear the jewelry. So we have a wide range in it. Renisha, the name itself says Rani Shah. So when you wear the jewelry, you feel like a Rani, queen itself. Okay. So we started the journey in 2017, but the main functioning and everything started in 2019. The USP of the jewelry is the OTP pieces, one-time pieces, which we have the sets, which are designed with intricate work of ropes and threads and nakashis. We have different segments here. Like we have divided the collections into 6 different zones. One is the Nazakat, then the Noor, Ibadat, Dilkash, Afreen, and so on. So, as my husband already told you about just a second, the heritage and the mission. See, we are wanting to explore more marketplaces rather than just being compact in one segment only and being in one market zone only. We are into retail, wholesale, and manufacturing, and even importing. So when you connect with Renisha, you get a wider range with everything. We help you with brand development and also with your franchisees and everything. Like when you connect with Renisha, you get everything sorted. So the main vision is to, don't go out anywhere around, just connect with one place and you get everything sorted. That's the main vision and mission about Renisha. As I told you about the collections, it's Nazakat Noor.
Nazakat is the intricate thread work I was talking about, the jute threads we are using for sets as well as for the earrings. Noor, all oxidized jewelry. Ibadat is all God-based idol worship and all this. Nayab is gold polish and that is very modern. Like everybody does not like the oxidized part of it. So you can get a different vision of silver with Nayab collection. Dilkash is all stone-based jewelry. All the delicacy of cut stones being used, the Rajasthani tribe work is done. Afreen is all minimalistic range of rose gold polish, which can be easily worn on regular basis. The brand has a high standard of quality and it is very pocket friendly as well. And as you know, silver is an asset and plus it is allergic free. So it is very much affordable. Plus it's an asset, so very much friendly also for future. Uh, Thus, I would like Ashokji, please could you just uh, take it forward? Yeah, thank you, Devri. So I think it's a very good opportunity as this is a silver jewelry brand, and especially like they have their own manufacturing unit, plus they have their unique designs, they have a design team in house, plus they are importing international jewelry. So Mr. Pramukh, he is the specialist, I think, in international jewelry procurement. He has traveled all over the world and he has looked at the best designs and he brought it to India. And that's basically the whole strength in procuring your. You can continue the screen share, but let me share my screen. No worry, I'll share from my end. Hello. Yeah. So I think jewelry in India, I think, is a very special category, right? So if you look at this market segment, because we are talking about the jewelry brand and retail space, and so overall retail market in India, if you see, it's around more than $800 billion market, and of this, jewelry and watches and accessories, this is a $72 billion. So that accounts for like 9%, 9% of the market share, and this is the third largest category, basically where people spend more money in buying these kind of products. Right now, but why silver? Right. So if you look at the demand in India, so like especially after 2010, and this market is already increased by 4x. So from like 500 600 metric tons, our demand has gone up to 2000 plus metric tons for the year. And if you look at my right side map of India, so it gives you the clusters where basically gems and jewelry markets are more focused on, right? So being or you can say based out of UP, so Delhi NCR plus your UP, I think is a very good market for Ranishaa to target for the potential franchisees. Right now, and that's significant, I think, parameter, or you can say the key value for the silver jewelry brand. If you look at the price of the silvers in 1981, if you see this price, this is consistently increasing. Just only this is the 2021. This was basically your global meltdown, and you can say, so that is the during the global crisis, this market was price was down. But if you look at the going forward in 2021 and 2025 and 2026, this price of silver is going to increase. So these prices are basically your silver in kgs. So it's around 1,20,000 rupees per kg kind of price that we expect in the near terms, right? So that gives the significant confidence just to get into this market.
And if you look at the Indian mindsets also, so people like silver buying is basically the next category after gold. So people prefer more to buy silver, and silver is just not only for fashion. They also like buy silver as their investment. You know. So in India, if you look at the opportunities, of course, there are multiple parameters and drivers for this industry, as like international lifestyle, fashion, and if you see the nowadays the like for quick fashion, or you can say fast fashion, so people prefer to buy more this kind of jewelry products that suits their uh, uh, personality plus their costumes. And going forward, India is a very good marketplace apart from fashion. Is gifting is a another very large segment for silver jewelry and articles. So like Diwali festival, Holi festival, or New Year Eve. So these are the new festival seasons plus corporate gifting. So the products that Ranisha brings and they have in their portfolio is very suitable for my corporate gifting as well. So I think if the franchisee partner, if they focus on only on the corporate gifting for a season, I think they can recover their entire investment in one season itself. Yeah. Now, of course, margins and price points will be different for the corporate gifting category, but the market is quite large. If you want to look at the like who are the key players who are leading in this segment, yes, there are a lot of brands, but they are the traditional gold jewelry brands. Their focus is not on silver, right? So silver is Ranisha is I think is the one who can take the lead in the entire region to become the leading brand in silver jewelry. Now our franchisee partners, so we are looking for single unit and multi-unit franchisee partners in Delhi, NCR, and UP. And this franchisee proposal is my franchisee has to invest in store setup and they have to operate the store. Where Ranisha as a brand, they will provide you the complete support in terms of your location approval, your setup guidance, your interior design layouts, inventory. So whole inventory basically will be supplied by Ranisha. And again, here Ranisha they take basically inventory deposit, and they provide you the inventory against deposit. So my franchisee investment, whatever the money they put in terms of inventory stock, that is completely secure, and you will get basically all the stock rotation and correction from the company side. Now the investment, okay, so we have the two different opportunity for investment. One concept is my shop in shop, and second one is my exclusive shop. So if somebody wants to set up a new exclusive shop, so the area minimum requirement is 500 square feet. Setup cost is 21 lakh rupees. Franchisee fees is very nominal, it's 2 lakh rupees. And against this franchisee fees, you will get complete support in terms of your store design, setup, advisory training, product training, staff training. And franchisee has to pay up security deposit against inventory, that's 50 lakh rupees. So in jewelry business, I think at 50 or 70 lakh rupees, I think it's a very good and low investment opportunity for the franchisee partners. The partners who want to invest in the jewelry business, I think there is nothing less than multiple crores, right? So silver, this is I think a unique opportunity which gives you that you can start your business in 50, 70 lakh rupees. And if you calculate the margins, so margins on the product are varying from 15% to 30%. So again, jewelry brands, they work on like making charges. So they have a limitation on the profit margins. But here our products, because we are procuring internationally, and plus we have our own manufacturing. So we have the capability to
productize it, and we can pass more margin to my franchisee partner. So my exclusive store, it gives me over 100% return on investment over a period of 5 years. So if you look at the cumulative investment, is going to be more than 5x. My break even is going to be around 16 to 18 months against your capex, that is your 23 lakh rupees. Plus your 50 lakh rupees is safe and secure. Whenever you want to exit from the business, you will get your 50 lakh rupee deposit back, and company will take over entire inventory that is given to my franchisee. Another offering is for shop in shop. So like some existing traditional jewelry brands, or the players who are already involved some kind of like fashion related uh, uh, retail stores, they can give or provide a dedicated space of like 300 square feet, and they can start our franchisee store. So their investment is just only 8 lakh rupees, because you are setting up an exclusive area or space for us. So that's only 8 lakh rupees. We don't charge any franchisee fees in shop concept. Plus, franchisee retail partner has to give 35 lakh rupees of security deposit. My margins are same, even it's a existing retail store or it's a new retail store. My margins are same on products. A return on investment is 80% in my shop in shop concept, and break even is only 3 to 4 months for one existing store. Agreement period is 7 years, so we are looking for long-term partners who stay in business with us for a longer period, and they can withdraw basically more profits, more benefits going forward. So who can be our ideal partner profiles? Yes, we need basically investors who have the financial bandwidth and the location. That can be considered for shop and shop concept. People who are already having some premium retail markets and retail presence. People who have the capability to invest and operate the store. And local investor, basically who wants to diversify their business into new income streams. They will be very lucrative for us. And investors with good local market connect, because if the fashion related retail stores, because they have their customer base, and if they start this business in their existing store, immediately they can convert higher audience, and they can much more faster and better sales as compared to standalone store. Now, of course, we want people basically who has a high visibility. Right now, our rollout plan. So these are the few cities that we have shortlisted to start with. So we are looking for 20 stores in 5 states in northern India in next 15 months. So Delhi NCR, we are looking only 4 stores as of now. We are also targeting Jaipur for 2 stores, Agra, 1 store, your Allahabad, Bareilly, Ghaziabad, Kanpur, Kanpur or Lucknow, we require basically looking for 2 stores, and remaining your Meerut, Noida, Varanasi, Dehradun, Bhopal, and Indore, we are looking for 1 store. So our primary focus to set up the limited stores, make them successful. Once we achieve success, and then my franchisee partner has the right of refusal to service that demand. If my franchisee wants to set up more stores, they are most welcome. Right? If my existing franchisee partner in a particular city is not able to fulfill the entire demand, then basically company can opt for the another franchisee partner, securing the territory for my existing partner. So there's will be no clash in terms of geographic locations. Franchisee support in terms of, so you will get the entire hand holding and complete support from the brand from the starting of your retail outlet, your interior design, decoration, furniture, your inventory display management, inventory planning. Yes, we will also help our franchisee partners in terms of their staff hiring and training.
Launch marketing plan will be provided by the brand, and my franchisee has to execute as per the brand guidelines. Store audit and advisories will be provided on a regular basis. Staff training and store audit will be done on the frequent basis to advise our franchisee partners to improve efficiency and operational capabilities. New product categories as based on our international research and our customer centric designs, we will keep evolving new products to our franchisee partners. Company also ensure the profit margins for the franchisee. So all the discounts, end consumer discounts or end of season sales or any festival discounts will be borne by the company. So my franchisee margins are fully protected and secure. In terms of social media marketing, digital marketing, my basic company is going to provide you the complete guidance, authorized material, and social media handles will be directly handled by the company itself. So what are the regions to partner with Ranishaa? So there's a plenty region in terms of B2B business setup, franchisee module, business consultancy, your planning, your brand development, social media marketing, retail operations, online promotions, and customer relationship management. Across all categories, brand will provide you the complete hand-holding and support to make sure that my franchisee is successful. If my franchisee is successful, brand will be automatically successful. So with this, I will end the presentation. And I think, Neha, we can take up the questions before starting financial discussion. Thank you so much, Ashok, and thank you so much, Pramukji and Deviji, for coming on this webinar. And I'll also request all our friends who are watching us on the webinar and also our friends who are watching us live, you can leave questions in the Q&A box, and especially our friends who are watching us live, you can also reach out to us on the hotline number and the email that we have shared with you. And I'll request, I see some questions which have already started to come in, and we'll be happy to take all these questions live. My request to all our friends who have joined in, and when you put your questions, please also mention the city of your interest, and you can put your questions with respect to the business model, overall financials which have been shared with you. So we'll cover as much as we can in the next 10 to 15 odd minutes, and any detailed discussions on the partnership, on the financials is something that we like to have one-to-one, where we like to understand your profile in detail and invite you for maybe a one-to-one meeting or a Zoom call post the webinar. So very quickly, I'll sum up the entire opportunity. And so Ranishaa comes from the House of Tikaram and Son Jewellers, which has a very big legacy of nearly 101 years. So this company started in 1922. And Ranishaa is a brand from the House of Tikaram. So Ranishaa is a new age brand and very well backward integrated. There are very few players today in the market who have backward integration, especially when I talk about silver as an industry. So when they have backward integration, your margins which they're able to offer to their franchise partners and also to the end customers are comparatively better than others who are procuring from manufacturers, right? So Ranishaa, they are in three broad businesses. They're also into wholesale business. They are retailers. They're also manufacturers, right? So they have a great integration, backward integration done in their business model. The market opportunity and overall, if I talk about the total addressable market in this segment is also very, very big. Right? So if I take into account the increasing, prices of gold and also the dynamic or the ability of a silver to offer a variety of designs, and more than that, within the affordability or the range of a customer is something which is also a big reason why the demand for silver jewelry has become big, right? Even the preference for silver jewelry for daily wear, minor occasion, there's a big rise in demand for today designs which are not very heavy, right? Something that you can wear on a daily basis, minimalistic designs. I saw Deviji also mentioning about the same. And so this has become a new age accessory choice for a lot of consumers today.
So our focus markets are primarily Uttar Pradesh and the cities that we saw in the presentation. And we did talk about our priority markets also in UP and also Delhi NCR. So in the first phase of expansion, we would look at these two states. And there are two models which are being offered. One is shop and shop, where somebody is already in the business and does not have silver as a category. We'd be happy to offer a shop and shop to those partners. And the second is a complete exclusive brand outlet where the requirement is 300 odd square feet. The investment for exclusive brand outlet would be to the tune of about 21 lakhs for the initial capex, and about 50 lakhs is the deposit that you give to the company. And important point, because I saw somebody ask about what happens to the stock. So there's no risk towards the inventory because the entire inventory management is done by the company. Against the deposit which is given, the company would supply stock at the outlet. All kind of promotions which are happening around any kind of seasons, festivals is something which the company would take care of. So the entire margins, which are broadly between 15 to 30%, is something which the franchisee would get that. Right? So we'll take some questions, Pramukji, and maybe to start off with, I think we did talk about the competition also in the market, but I'll request if you see yourself, in comparison to some of the other players at various levels, what are 2 or 3 things that you think, puts Ranishaa at an edge over the other players in the market? And followed by this, we'll take some questions on the unit economic, how it works, typical stock turn, and I'll take some questions also from our investors, right? So I'll request you, we can start with the competition understanding and then subsequent questions. And friends, my Yes. request to you would be, I see some of you have also raised your hand. Whatever questions you have, please write them in the Q&A box and we'll take these questions for you. Over to you, Pramukji. यस हाँ अगर हम अपने कंपटीशन की बात करें तो मतलब मेनली हमारा जो कंपटीशन है वो ज्वेलर्स के साथ ही है क्योंकि वो सिल्वर ज्वेलरी रखते हैं। अगर हम फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं तो फ्रेंचाइजी अभी सिल्वर ज्वेलरी की कोई भी नहीं है, ऑनलाइन कंपटीशन है। लेकिन हम लोगों के साथ कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब हमारे मोनोपोली आइटम्स हैं। तो अगर वो मेरे पास मिल रहे हैं या किसी ज्वेलर के पास हैं तो वो वाया वाया मेरे थ्रू ही गए होंगे। और फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में हमने बहुत कोशिश ये करी है कि जो हम B2B में स्टॉक दे रहे हैं उसको हम फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में ना रखें। और फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में जो जैसे मैंने अभी जो बनारस ओपन किया है या हम लोग जो शॉप एंड शॉप मॉड्यूल में काम कर रहे हैं वहाँ का स्टॉक हम B2B और ऑनलाइन अपने स्टॉक से बिल्कुल अलग रखते हैं, जिससे कि एक वहाँ पे प्रीमियमनेस बनी रहे। तो मतलब जो अभी फ्रेंचाइजी मॉड्यूल मैंने बनारस में जो मैं अभी ओपन किया है, मतलब वहाँ बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है। जो बाकी ज्वेलर्स हैं उन वहाँ पे भी मैं B2B में सामान देता हूँ और जो मेरा अपना फ्रेंचाइजी है उसमें स्टॉक बिल्कुल अलग है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है जी। Helpful. And maybe I'll also like to take a moment to showcase your website, and if you can also take us through typical हमारा जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, क्या क्या कैटेगरीज हम रखेंगे। प्रमुख जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी if you can also give maybe an understanding of the stock categories. Yes. क्या मिक्स रहेगा हमारी कैटेगरीज का? अगर हम 50 लाख की स्टॉक की बात करते हैं जी तो ये 50 लाख के स्टॉक के अगेंस्ट आउटलेट पे कितना हमारा स्टॉक लेवल रहेगा? एंड टिपिकली जो कैटेगरीज हम देख रहे हैं आपकी वेबसाइट पे भी, इसमें हमारा जो कैटेगरी मिक्स है वो हमारा क्या ब्रॉडली रहता है? सो इफ यू वांट आई कैन क्लिक वेयरएवर यू वांट, बट फ्रेंड्स आई वांटेड टू शो यू द Yes. वेबसाइट ऑफ द हाँ कंपनी। सो इफ यू लुक आप एट द हाँ जी, मे बी यू कैन डू इट यस यस आप मेरी वेबसाइट पे जितनी भी कैटेगरीज देख रहे हो ये सब की सब आपको मेरे फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे मिलेंगी, जिसमें कि चेन्स हैं, पेंडेंट सेट्स हैं, रिंग्स हैं, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, बैंगल्स, नेकलेस। इसके अलावा कुछ चीजें जो मेरी वेबसाइट्स पे नहीं है, जो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स हो गए, क्वाइंस हो गए, आइडल्स हो गए, ये भी हमने अपनी सब फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में ओकेजन मतलब जैसे दिवाली का टाइम है तो आइडल्स हो गए, क्वाइंस हो गए, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स हो गए, ये भी हमने सब अपनी फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के लिए रखे हैं। लेकिन आप मेरी वेबसाइट पे जो डिजाइन्स देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट के लिए हैं। और जो मैं B2B में ज्वेलर्स को देता हूँ वो डिजाइन्स बिल्कुल इससे डिफर है। और जो डिजाइन्स मैंने अपने फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के लिए निकाले हैं वो बिल्कुल अलग हैं, जिससे कि कोई भी मार्केट आपस में क्रैश ना हो कि जो मेरी वेबसाइट से ले रहा है वो मेरी वेबसाइट से ले रहा है। अगर वो मेरे फ्रेंचाइजी पे जाता है
और अगर उसको उसकी डिमांड करता है तो वो उतने ही मार्जिन के साथ मैं अपनी वेबसाइट्स के उसके थ्रू दे सकता हूँ, लेकिन वो डिजाइन उसको वहाँ फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे नहीं मिलेगा। तो मैंने तीनों मार्केट को डिफरेंशिएट करके अपना स्टॉक डिवाइड किया है। और ये जितनी वैरायटी आप देख रहे हो, ये जो हमारे कलेक्शंस हैं, नजाकत, नूर, इबादत, नायाब, दिलकश, इसी तरीके के कलेक्शन के साथ इसी के सिमिलर आइटम्स लेकिन डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट डिजाइन, मैंने 50 लाख के इन्वेस्टमेंट में लगभग कोई 50 kg का स्टॉक इन सबको बराबर डिवाइड करके मैंने अपने फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे रखा है। एक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रमुख जी ने मेंशन किया है। क्या होता है जब भी कोई भी आपका प्रोडक्ट ओमनी चैनल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं आपके, ऑनलाइन भी प्रेजेंट है, सो जो प्राइस पैरिटी है वो कई बार नहीं रहती है। सो व्हाट कंपनीज डू इज आइदर दे मेक द प्राइस पैरिटी और दे मेक अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट फॉर देयर चैनल। सो इन केस ऑफ EBO, the entire product portfolio, the designs will be completely different to what you see on the platform of the company. So which means there is no clash, so to say, like Pramukh ji mentioned. So Pramukh ji, इसमें हमारा स्टॉक कितना रहता है? 50 लाख हम डिपॉजिट लेते हैं, 50 लाख के अगेंस्ट आउटलेट पे कितना एक गिवन पॉइंट इन टाइम पे कितना स्टॉक लेवल्स 50 to 60 kg। 50-60 किलो का हमारा इसमें रहता है। जी। और इसमें अगर हम ब्रेकअप समझे, जितनी भी कैटेगरीज हमने आपकी वेबसाइट पे देखी, सो हमारा कैटेगरी मिक्स इसमें क्या होगा? मतलब जो चीजें हॉट सेलिंग रहती हैं, जो रूटीन वे में जाती हैं, रिंग्स, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट्स, इनमें स्टॉक वैल्यू जो है ज्यादा रहेगी। मतलब ऐसे रिंग्स हम कहें तो 50 kg में 5 kg रिंग्स हैं, 5 kg ईयर रिंग्स हैं, ब्रेसलेट सबके 5 kg हैं। जो रूटीन में नहीं बिकने वाली चीजें हैं, जो हैवी आइटम्स हो गए, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स हो गए, क्वाइंस हो गए, तो उनका जो वेट स्केल है वो कम है। तो मतलब मैं फ्रेंचाइजी से अपना एक सिक्योरिटी अमाउंट लेके उसको स्टॉक देता देता हूँ और उसकी मैं सेल देखता हूँ। जैसे जैसे जो चीजें मैं देखता हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि हर सिटी का अपना अलग अलग रूटीन है। अब जैसे बनारस में जो मैंने फ्रेंचाइजी ओपन किया, वहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी सबसे ज्यादा जा रही है, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट बहुत है, फॉरेनर्स बहुत है। तो मैं वहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ही ज्यादा फुलफिल कर रहा हूँ, बशर्ते कि रोज गोल्ड और येलो से। तो किसी भी मार्केट में देखने में समझने में समय लगेगा। तो वो स्टॉक जो है मेरा ऑन अप्रूवल है, तो उसका फ्रेंचाइजी से कोई मतलब नहीं है, उसने मुझसे बाई तो किया नहीं है। तो अब वहां पे मैं देखूंगा कि कस्टमर की वहां की क्या रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसको स्टॉक प्रोवाइड कराऊंगा। अगर हम प्राइस पॉइंट्स की बात करें, लार्जली हमारे प्राइस पॉइंट्स अगर कैटेगरी वाइज अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखिए आप शेयर कर सकें सर व्यूअर्स के साथ। हाँ, मतलब अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स से सिल्वर ज्वेलरी की, तो मेरे प्रोडक्ट्स मैं डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा हूं। तो मैंने अपना प्राइस जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव रखा है कि अगर रिंग्स की बात करें तो 500 to 1000 के बीच में आपको सिल्वर रिंग्स मिल जाएंगी 92.5 हॉलमार्क के साथ, जिसको कि आप यूज करने के बाद 2 महीने, 3 महीने, 1 साल बाद आप वापस करोगे तो आपको उसका 100% 9 to 5 से रिटर्न मिलेगा। तो एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप अगर आर्टिफिशियल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी जगह आप सिल्वर पे इन्वेस्ट करिए। सिल्वर एलर्जिक फ्री है, सिल्वर आपका एक प्रेशियस मेटल है जो कि आप यूज करने के बाद अपने रिटर्न उसमें ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है सिल्वर ज्वेलरी के साथ। और मतलब मैंने प्राइस इतने कॉम्पिटिटिव रखे हैं कि आदमी अगर उसका 1000 का भी बजट है तो 1000 में भी वो 2 आइटम्स वहां जाके परचेज कर सकता है। उनके जो हमारे अभी करंट स्टोर्स आ रहे हैं, इफ यू वांट टू टेल द व्यूअर्स आल्सो किन किन सिटीज में आ रहे हैं हमारे स्टोर्स, को विजिट करना यस। चाहता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, आप प्लीज हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। नेहा ने हमारा ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किए। इफ यू वांट टू इवन विजिट दी स्टोर्स प्लीज लेट अस नो। और इसके अलावा कुछ और लोकेशंस भी है प्रमुख जी जो आपने मेंशन किया था आपकी लॉन्च होने वाली हैं? यस। मेरा सोनीपत में 1 Jan को लॉन्च होने वाला है, मेरा मेरठ में लॉन्च होने वाला है, मेरा बरेली लॉन्च होने वाला है, हमारा बनारस बलिया अभी ओपन हो चुका है। लेकिन अगर कहीं से भी किसी कस्टमर की क्वेरी है, क्योंकि मैं B2B में इंडिया लेवल पे सप्लाई करता हूँ, अगर मेरे प्रोडक्ट्स किसी को लाइव देखने हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं अपना B2B का मैं अपना एड्रेस दे सकता हूँ, जिन ज्वेलर्स को मैं देता हूँ, जो ज्वेलर्स मेरा शॉप एंड शॉप मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, तो वो वहां पे प्रोडक्ट्स जाके लाइव देख सकता है। उसी से सिमिलर प्रोडक्ट्स
और डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसको फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे मिलेंगे। तो उसको लुक एंड लाइव फील करना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, अगर इंडिया लेवल में कहीं भी, क्योंकि मैं B2B में पिछले 5 ईयर्स से काम कर रहा हूँ और मेरी सप्लाई इंडिया लेवल में हर जगह है। जब एक स्टोर लेवल का यूनिट इकोनॉमिक्स में लूंगी, मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ रही थी जो हमारे व्यूअर्स से आए हुए हैं। अगर हमारा अ, जो सेल है टिपिकली, अगर मैं स्टॉक टर्न की बात करूं, अगर हम 50 किलो का स्टॉक रख रहे हैं, एक तो उसका MRP वैल्यू इज वन क्वेश्चन विच आई सी, वैल्यू क्या होगी उसकी। उसकी वैल्यू लगभग कोई 70 lakhs के आसपास होगी। और हमारा जैसे इसमें स्टॉक टर्न साल में कितना होता है सिल्वर का, उसके हिसाब से अगर आप ट्रांसलेट करके बता सके भी हमारा 50 या 70 लाख का हमारा वैल्यू का स्टॉक उसमें रखा होता है, तो कितना सेल एक्सपेक्ट करते हैं हम, इस रिलेटेड हमारे खर्चे क्या होते हैं, और नेट मार्जिन एक फ्रेंचाइजी को क्या यस बचने यस वाला है। यस यस, हम जो एक सेल एज्यूम कर रहे हैं एक स्टोर से, जैसे कि मेरा बनारस खुला हुआ है या मेरा शॉप एंड शॉप आपका हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, मेरठ है, तो यहाँ पे हम एक सेल एज्यूम करते हैं 50,000 रुपीज पर डे की। ठीक है, तो हमारा लगभग कोई सेल, एक एवरेज सेल, जैसे अभी फेस्टिव सीजन है तो वो 1 लाख रुपए की सेल कर रहा है, हाँ जी। तो हम उसको एक 50,000 का एक एवरेज सेल लेके चलते हैं पर डे की, तो 15 लाख के आसपास हमारा कोई मंथली सेल आती है, एक एवरेज सेल। और इसमें हमारा 30% का मार्जिन है, तो लगभग कोई 4.5 के आसपास फ्रेंचाइजी को बचता है, जिसमें से कि वो 50,000 सैलरी निकाल देता है स्टाफ की, और अगर कोई रेंट है 40-50,000 वो निकाल देता है, तो लगभग कोई उसको 3, 3.5, 4 लाख रुपए एक एवरेज बचता है। और बाकी डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे है, जैसे कि अगर जैसे मैं मेरठ का बताऊं तो मेरठ आबू लेन पे है, तो वहां पे वॉकिंग बहुत अच्छी है, तो सब कुछ कस्टमर वॉकिंग पे डिपेंड करता है कि अगर वॉकिंग अच्छी है, अगर दिन में 25 कस्टमर की वॉकिंग है तो 50,000 की सेल एश्योर्ड है। और क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स इतने अट्रैक्टिव हैं कि अगर आप उसे डायमंड से भी कंपेयर करें, उसे आप गोल्ड से भी कंपेयर करें, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जिन कंट्रीज से काम कर रहा हूँ वो उनका स्पेशलाइजेशन है प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का, तो क्वालिटी को लेके कोई कंप्रोमाइज नहीं है, एंड उसकी प्योरिटी को लेके कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और जो हम स्टोन्स यूज कर रहे हैं वो बेसिकली हम मोस्टली सरोस्की स्टोन्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी कभी भी किसी भी चीज में आपको कंप्लेंट नहीं मिलेगी जी। All right. And any locations, Pramukh ji, जो आप, I have a question from Mr. Krishna Kumar. Where can we open the store? I think what he might be referring to is the kind of locations. जो locations आपने बताई है काफी premium markets हैं. मेरठ में अबू लेन is a very popular market. So कौन सी locations आप ideally आप suggest करेंगे खोलने के लिए? And I see he even mentioning mall, and I personally feel mall is a very good location to open यस a यस brand of this nature. So, Krishna ji, malls are very good. I don't know what city you come from. If you can even mention your city, would be great. But हमारी कोई भी आपकी ज्वेलरी मार्केट्स हैं, these are ideal locations where you should open, and malls also work very very well. अगर आप एरिया देखें, comparatively this area is very small, 300 स्क्वायर फीट का एरिया है, और सिल्वर एज अ कैटेगरी इसका पर स्क्वायर फीट एफिशिएंसी काफी हाई होता है, सो विच मींस दैट जो आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो ज्यादा हाई है, जो आपका एवरेज बिलिंग होता है वो हाई होता है, सो इट इज वेरी इजी इवन फॉर अ मॉल, अगर आपका लोकेशन मॉल के अंदर भी है, आप इजिली अपना सारा रेंट के साथ अपना सारा एक्सपेंसेस कवर करने के बाद यू कैन make good profits, and malls obviously have a bigger footfall, but we need to be very very specific कौन सी मॉल में और कौन से हम लोकेशन फ्लोर पे हम खोलना चाहते हैं, यस but यस। ideally jewelry markets are good. Pramukh ji, maybe you want to add on to that. Krishna Kumar ji नोएडा से हैं, he's from नोएडा. अच्छा हाँ, तो नोएडा जैसे कि नोएडा आपका मॉल ऑफ इंडिया हो गया, या आपका दिल्ली में दिल्ली NCR मैंने अपने एरिया में दिया ही हुआ है कि मैं यहाँ पे फ्रेंचाइजी ओपन करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मेरे सिटी से नियर बाई है। तो अभी हम जो स्टार्टिंग में हम प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे सर्विसेज को लेके या किसी भी चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने पहले यूपी और दिल्ली NCR चुना है। तो अगर मॉल ऑफ इंडिया हो गया या आपका सिलेक्ट सिटी वॉक साकेत हो गया, ये एरियाज जो है यहाँ पे वॉकिंग बहुत अच्छी है, और यहाँ पे 100% पे अगर मेरी फ्रेंचाइजी ओपन होती है तो उसमें बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। Keep writing in. We'll also take any questions which have not been
Distributors नहीं देख रहे हैं, Sharon. We're only looking at shop and shop. And shop and shop profile is typically jewelers from the same background who don't have the portfolio. And other is an exclusive brand outlet. We're not specific on the profile of people, but we need somebody who can put his time and operate the business. Pramukh ji, कौन-कौन सी key markets हैं? I think there are a couple of locations where you mentioned you already having your outlet. जिन locations पे भी हम present हैं, there's an opportunity for us to open the second or the third store. उन locations पे हम entertain करेंगे inquiries. बिल्कुल बिल्कुल करेंगे. पहले तो मैं फ्रेंचाइजी को अपॉर्चुनिटी दूंगा कि अगर उसको स्टोर एक्सपेंड करना है तो वो कर सकता है. कि अगर जैसे कि जो मेरा बनारस वाला बंदा है वो या आपका ये गोरखपुर और आसपास के एरिया में इंटरेस्टेड है और बनारस ही इतना बड़ा एरिया है तो वहाँ पे वो 2 स्टोर ओपन करने में इंटरेस्टेड है, तो पहले तो अपॉर्चुनिटी मैं उसी को दूंगा जो मेरे से पहले से कनेक्टेड है. लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं एक एरिया में मतलब एक सिटी में 2 या 3 स्टोर खोल सकता हूँ. जैसे लखनऊ है, मैंने वहाँ पे 2 के लिए बोला हुआ है कि मैं वहाँ 2 स्टोर ओपन कर सकता हूँ. दिल्ली है तो दिल्ली के 4 रीजन है, ईस्ट, सेंटर, साउथ, वेस्ट, तो वहाँ मैं 4 स्टोर ओपन कर सकता हूँ. और बाकी एनसीआर हो गया हमारा सोनीपत, मतलब एनसीआर में तो नहीं आता लेकिन एनसीआर के बहुत पास में है. तो यहाँ हमारी लीड है जो कि हमें 1 Jan को ओपन करना है, तो उस पर भी काम चल रहा है. तो मतलब मैं इधर दिल्ली एनसीआर में मल्टीपल अगर आउटलेट्स हैं तो मैं कर सकता हूँ. Helpful, Pramukji. Friends, I'll request all of you. I think we have tried to cover up as many questions. Anybody who wants to come on a call or perhaps for a meeting, do let us know. We'll be happy to connect you for a one-to-one meeting. And all the locations that we just mentioned are the locations where they have launched and also coming up. Anybody who wants to see the collection can also reach out. We'll facilitate a tour or also maybe a meeting depending on your interest. And if somebody is also from the background of jewelry, you can let us know. We would entertain inquiries, especially for a shop in shop. And Pramukji and Diviji, before we close, I'll also request if there's a message that you want to give to everybody who's present here. Yeah, ma'am, just before you say, I think I want to add one more point. I think that we have missed out in the entire presentation. The security deposit amount that we are talking about for 35 lakhs and 50 lakhs, company is also offering 4% interest against that security deposit, apart from your basically the margins on the product. So that's another value addition. Okay. So friends, there's a 4% interest that you get on that. And also at the end of the term of the 7 years, your amount will also be given back. Let us discuss. Show, we don't have your name. I see somebody. Okay, Mr. SK Singh, you can, we can definitely speak to you, but we're not looking at any master franchisees. We'll be happy to explore any discussion with respect to exclusive brand outlet. So post the call. We have a team based out of Delhi who are working and leading the project, who would reach out to you and connect you with Pramukji for a subsequent call. Over to you, Pramukji, for your last comments and message before we close. Devi, पहले Devi. Please go on. Thank you so much. Thank you so much, Franchise India, for giving us this platform and the opportunity to, showcase our brand and come up with this project and help us grow with your help. Firstly, when, like I previously also added, like when you connect with Ranishaa, we help you with everything, with the franchisee level also, even for your websites also. If you are interested, you can just connect with us. We help you grow. See, we are not comparing our brand with the other brands. We are exclusive with our product line and everything. We have fusion jewelry as well. And silver is the new set of jewelry which is more worn these days and being applauded by everyone as gold value is increasing and it's not rocket friendly anymore. So silver has a boom phase and it's not been explored more. So try and think about this project and let's work together hand in hand and see a better future here. Over to you, Mr. Pramukh.
हाँ, जैसा कि दिव्य ने आपको बताया, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। तो इन्वेस्टमेंट पार्ट्स के हिसाब से तो सिल्वर बहुत अच्छा ही है, और अभी मार्केट में गोल्ड का रेट और प्लेटिनम रेट बढ़ने की वजह से सिल्वर ज्वेलरी का मार्केट में बहुत अच्छा चलन है। तो अगर आप इसको एज फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में अगर हम प्लान कर रहे हैं, तो जो भी इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे उनको आई होप बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। अभी यूपी में पिछले 4 साल से मैं ऐसे B2B में काम कर रहा हूँ। डे बाई डे सिल्वर ज्वेलरी की जो एक डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है। इम्पोर्ट रेशियो जो है सिल्वर ज्वेलरी का बहुत ज्यादा हो गया है। तो मतलब वो ज्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड है। मतलब आदमी गोल्ड बाई करता है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, कि वो ले रहा है और उसको इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ेगी तो वो उसको रिटर्न करके अपना पेमेंट क्लियर कर सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट के साथ हम सिल्वर को भी लेके आए हैं, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। तो सिल्वर का रेट भी आप अगर गोल्ड की तरीके से देखें तो वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। और अभी इस टाइम पे गोल्ड सिल्वर जो है 70,000 रुपीज पर केजी के हिसाब से चल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। तो मतलब आई होप कि फ्रेंचाइजी जो भी मेरे साथ जुड़ेगी उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलेगा। Thank you so much, Pramukji. You had a great presentation, and also given the legacy or experience in the business, we are really hopeful that there should be a good opportunity for partners who perhaps want to join you in the business. And I'll request friends, all of you, to please reach out to us. Any questions you have, location अगर आप share करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी information जो आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज हमें आप लिखिए या कॉल कीजिए हॉटलाइन नंबर पे. We'll be happy to discuss in detail. And before I close, I also request now Neha to kindly take over. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot, Mr. Vesh, Mrs. Vesh, Ashok sir, Sonia ma'am, for joining us and sharing so much details related to the brand. I'm sure the brand details and insight which we have shared with our participants are going to help them in finding the right option for their business planning. Guys, we try to cover all your questions, but still, if there is anything which is left unanswered, and anything you want to discuss with us, I have already shared the contact details. Our hotline number is 9717683838. You can also reach out to us. You can write us at feedback@franchiseindia.in. Tomorrow again we are coming up with our new brand riders. I have already shared the registration link in our chat window. You can register yourself right now also to join our tomorrow's business opportunity over chai session with riders. It's a leading brand for cycles and bicycles products. They're giving minimum guarantee or revenue share, and they have models of FOFO and FOCO. To know more about the brand and the opportunity, please join us tomorrow at 12 p.m. Again, just to remind you, though I have already reminded you initially also, but again, I just want to remind you again that we are coming up with Mumbai Franchisee Show with bigger in opportunity, with 300 plus business ideas, 400 plus delegates, 10,000 plus premium business visitors, 100 plus business concept from over 16 countries. So I would want you to block your slots. If you're a brand, you can reach out to us to book your booth. If you are an investor, you can have a beautiful opportunity to meet all the brands under one roof. I have already shared the link to register your slot with us for Mumbai show for 19th and 20th of November. Thank you so much for joining us. See you tomorrow. Thank you, everyone.